रिसेंटली आई मेड अ वीडियो ऑन मस्ट हैव फॉर्मल्स, वो फॉर्मल कपड़े जो आपकी वार्डरोब में मैंडेटरी हैं, होने ही चाहिए। एंड आई ऑल्सो टोल्ड हाउ फिट एंड क्वालिटी आर ऑफ अटमोस्ट प्रायोरिटी। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, डू चेक इट आउट सो दैट आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए। मूविंग ऑन, इन टुडेज वीडियो द पर्पस इज कि आप ऑफिस एनवायरनमेंट में ज़्यादा स्टाइलिश कैसे लग सकते हो, और प्राइमरीली हम फोकस करेंगे हमारे फिट्स पे एंड द कलर स्कीम्स दैट वी आर गोना पिक। टुवर्ड्स द एंड, यूजिंग दीज पीसेस मैं ऐसे 10 आउटफिट्स दिखाऊंगा दैट यू कैन डेफिनेटली एस इन योर ऑफिस। हाय, माय नेम इज वैभव केसवानी, योर मेंटल स्टाइल कोच। इफ यू वांट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ यू, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। इन कपड़ों में से कुछ ऐसे पीसेस हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बेसिक्स की वीडियो में दिखा चुका हूं। दे आर मैंडेटरी, दे आर योर फंडामेंटल, so make sure you have them. Further, I've also added few of these clothes from my personal wardrobe just to make these outfits a little more interesting. Mostly इन सारे कपड़ों के लिंक्स मैं आपको दे दूंगा, बट जस्ट इन केस कोई मेरी पर्सनल वार्डरोब से है या फिर अभी आउट ऑफ स्टॉक है, उसके सिमिलर लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। द फर्स्ट पीस ऑन माई लिस्ट इज दिस ब्यूटिफुल वाइन कलर्ड शर्ट। Now two things जिसमें हमें ज़्यादातर फोकस करना है, which is firstly the pattern. Vertical stripes दे रखे हैं, something which is acceptable in a formal environment. Secondly, जो color है, even though it is maroon, family of reds, a very regal and a royal color, however बहुत ही ज़्यादा muted tone है। यही अगर bright होता, then I would have suggested you not to go for it, but a color like this will definitely make your outfit look way more premium. Second and a very important piece that I've added is a black trouser. मैंने अपनी पिछली वीडियो में जानबूझ के नहीं किया था because I always wanted you to experiment more. However, if black trouser is a mandatory thing for you, I would suggest get it tailored just like this one. Like for instance, I've got side adjusters added to it. इनका कोई काम नहीं है, but they look very nice. इसकी bottom opening मैंने 18 इंच रखवाई थी ताकि नीचे की साइड एक फ्लेयर आए and the fit looks very nice and structured. Do not go for a wider bottom opening, for instance 22 inch or 24 inches, क्योंकि फिर वो पूरी बेल बॉटम वाली शेप आ जाएगी, एंड दैट इज समथिंग आई वुड नॉट सजेस्ट यू इन एन ऑफिस सेट। नेक्स्ट अप ऑन माय लिस्ट इज दिस ऑलिव शर्ट। एब्सोल्युटली लव द कलर ऑफ इट, द फिट इज वेरी नाइस। आई हैव आल्सो मेंशन्ड दिस अर्लियर, दिस इज वन ऑफ दोज शर्ट्स जब आप कम पहनोगे, बट इट इज एक्चुअली गोना मेक योर पर्सनैलिटी लुक रियली स्ट्रॉन्ग, एंड इवन आफ्टर योर ऑफिस आवर्स यू कैन लिटरली गो आउट in this shirt wearing it at a party or a date very easily. इसकी फिट और क्वालिटी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, सो इन माई पर्सनल ओपिनियन दिस इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। नाउ हैविंग मल्टीपल ब्लूज in your formal wardrobe is a no-brainer. Another blue that I would really want you to add is this vertical stripe shirt. Absolutely loved this one in particular. Vertical stripes again is a very safe option but makes you look stylish. इस शर्ट की सबसे ज़्यादा खास बात है इसकी versatility. From boardroom to interviews to an office day which is very chill, you can literally pull it off anywhere and everywhere. ये लगती काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है बट है बजट में, सो डेफिनेटली अ ग्रेट बाय। ये ऐसे छोटे डिजाइन और पैटर्न्स ही हैं जिसमें हम फॉर्मल्स में खेल सकते हैं, बीट द स्मॉलर चेक्स और वर्टिकल स्ट्राइप्स, एंड दीज आर द ओनली थिंग्स दैट वी नीड टू प्ले अराउंड। नाउ वी हैव ऑलवेज डन दैट विद शर्ट्स, इट इज नाउ टाइम टू एक्चुअली प्ले अ लिटिल विद द बॉटम वेयर टू, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव एडेड दिस नेवी ब्लू ट्राउजर्स विद स्ट्राइप्स ऑन इट। बहुत ही ज़्यादा इसमें ना मिनिमल और फाइन स्ट्राइप्स है, समथिंग विच इज़ ओनली गोइंग टू गेट नोटिस जब कोई बहुत ध्यान से देखेगा, बट दैट इज एग्जैक्टली व्हेन द इम्पैक्ट विल बी मेड। ये मेरी पर्सनल वार्डरोब से है, बट सिमिलर लिंक मैं आपको डेफिनेटली दे दूंगा। इट माइट नॉट हैव द साइड एडजस्टर्स, बट the vibe is going to be same and something which is going to be very appropriate for your office spaces too. Now of course when we are doing stripes in your bottom wear, you do not want any sort of patterns on the top, so make sure अगर कोई भी आप ऐसी trousers पहन रहे हो जिसमें थोड़ा सा भी डिज़ाइन है, be it self design as well, जो बिल्कुल कपड़े से सिमिलर होता है, तब भी आपको टॉप वेयर में हमेशा सॉलिड ही पहनना है। ऑफिस में अगर आपको वो ग्राउंडेड, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी शो करनी है, देन अर्दी टोन्स इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली हैव, एंड अ ब्राउन कलर शर्ट एक्चुअली denotes a lot of dominance. For days you really want to own the room, these are the kind of shirts that you want to wear. Great fit, बहुत ही अच्छा कलर है, and it is the color which is going to make the real difference. Brown is one color that not a lot of people would prefer in an office setup. They will stick to their blues or whites. So this is where you actually get the chance to stand out from the rest of the crowd. चाहे आप ये शर्ट लें या कोई और शर्ट लें, when you're going for shirts like this जो थोड़े से different colors की हैं, for instance brown या फिर मैंने जो olive दिखाई थी पहले, the only thing that you really need to take care of is कि उसमें कोई भी तरीके का डिज़ाइन नहीं होना चाहिए। The more solid and the more clean a shirt is, the better it is going to look. Next up on my list is this powder blue shirt that I've already shown in my must-haves video, और मैंने अच्छे से डिटेल में बताया कि क्यों
एक पाउडर ब्लू शर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनली इस शर्ट की बटन डाउन कॉलर्स, इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इट इज़ अ वेरी फाइन पीस दैट यू शुड डेफिनेटली गो फॉर। द comfort level is good and so is the fit. Definitely a no-brainer. Now because we are upgrading our style and we want to play with colors, instead of going for a beige color, I have opted for a very nice shade of brown. It is a very light brown, or you can also call it as a tan color. It is one of those colors which is very interesting to wear but at the same time is very safe. पर्सनली मुझे लगता है ऐसी पैंट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द टाइम्स व्हेन देयर इज एन इवेंट इन योर ऑफिस। उन दिनों में ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। द ओनली डाउन साइड इज कि इसकी वर्सेटैलिटी शायद थोड़ी कम हो, बट ऑन द डेज यू गोना वेयर अ कलर लाइक दिस, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू स्टैंड आउट। नेक्स्ट अप इज अ पोलो टी शर्ट दैट आई एम गोना यूज। पर्सनली आई लव इट। सेमी फॉर्मल वाइब देती है, वेरी क्लीन, वेरी नाइस। The best part about this one is the comfort that it offers, along with the perfect fit that I would suggest for a formal setup. Again, something that you can wear off your offices too. Once you're done with your offices in the evening, going out parties, chilling, dates, etc., this can be a great pick for days like that. Next up is again a plain white shirt but high quality shirt. The button down collars again are very important, जिससे इसका shape और structure हमेशा maintain रहे। The fall and silhouette of this shirt any which way is pretty nice. ये shirt typically matte finish नहीं है, हल्की सी इसमें shine है। इसका कपड़ा भी थोड़ा सा thick है, which is actually good because इसी से इसकी quality ज़्यादा अच्छी लगती है। Lastly, a very important shirt, especially for summers, a pastel shirt with linen blend. अगर आपको ऐसी shirts पसंद हैं, then obviously आप इसमें multiple colors के साथ भी जा सकते हो. You can experiment a lot, but personally going for a color like this is great because Indian skin tones के साथ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाता है. Gives a very very soothing effect. अगर किसी दिन अपने बॉस से काम निकलवाना हो तो ऐसी सूदिंग शर्ट पहन के चले जाना, या फिर अपनी कलीग से कॉफ़ी के लिए पूछना है, even on those days, this is going to be a great pick for you. Now that I'm done showing you these pieces, let's move on to my favorite part of this video, which is the styling part. I hope you got some really interesting outfits in today's videos. कुछ बहुत typical थे, कुछ बहुत interesting थे, कुछ थोड़े offbeat भी थे. But these are the kind of outfits that you would want to wear to your office in case you want to look way more stylish than you usually do. I hope you learned something new, enjoyed this video. I'll see you in the next one. Until then, take care, stay stylish.